Hi, all learners. When not to enter in a particular business, whether you are investing for long term or mid term. Here, topic is not for a short term intraday trader. So, first of all, one may use the same rule in a different moving average, but I'm talking about in an investment time frame. Suppose you are opening a monthly time frame and you want to hold that stock for a say 2 3 months or more than a year in that mindset. So whenever this is a 10-month moving average, 10-month moving average, if it is sloping down and price is also down below the moving average, then you should not take your entry. You should not take your entry. I'm just showing you on a chart, a historical chart. Don't think as a stock wise I'm talking about. So here what has happened, it was flat to down. So price was below this. So we will not take entry. Yes, by looking at anything because slope is down, continuously flat. There is no clear uptrend on a 10th month moving average. What we have seen, the price slowly eroded and came at a very low level. Now, after a long consolidation, what we have seen, first time the stock price came above 10th month moving average with a green candle. If it remain 4 months, you can consider 1 month as well. But the more consolidation and the more it sustain, and if 10-month moving average is going upward, तब आपको उस पर्टिकुलर बिजनेस में एंट्री ले सकते हो एज अ इन्वेस्टमेंट. नाउ इफ यू फॉलो हाउ टू ट्रेल एंड ऑल, जब तक ये पर्टिकुलर ट्रेन भी ऊपर है एंड द स्टॉक इज ऑल्सो द लाइन भी ब्रीच नहीं हो रहा है, जैसे आपका ब्रीच हो गया यू गॉट एन योर एग्जिट, क्या आपको एग्जिट मिल गया आपका इन्वेस्टमेंट में. नाउ इफ इट फर्दर गोज, आपको यहाँ पे भी दिखेगा थोड़ा धीरे धीरे वो वाला अप ट्रेंड नहीं रहा है. नाउ व्हाट वी हैव सीन, अगेन प्राइस इज मूविंग अप. नाउ इट मे बी अ सेकेंड इनिंग समथिंग, but as of now just a 1 or 2 months has happened. We may understand that whether it is a uptrend or not after we can pause and wait as well here. And because I'm not talking about a fundamental what you are planning, you'll have to, if you're biased, if you're taking entry, you need to keep your stop loss tight because it's showing that it has a very strong trend. Then it is muted, correction has happened, post correction again some accumulation. Now you can correlate with Techno Funda and you can take your entry. But here you got your exit. Now you may wait and then you decide, are you getting a trend correct or not? 2 months, it is 2 3 months, it's staying above this 10-month moving average. So it is giving a slight symbol that we can take entry. But when not to enter, few businesses where you should think of कि मुझे अभी एंट्री लेना चाहिए कि नहीं. अब देखो यहाँ पे जेबीएम ऑटो में क्या हुआ है. जेबीएम ऑटो सेम थिंग, जस्ट पुट अ 10-month मूविंग एवरेज व्हेन नॉट टू एंटर. वेरी सिंपल है. आपको जो भी फंडामेंटल डेटा देख के आ जाओ, उसके बाद इफ यू फील नहीं ये वैल्यूएशन सही है, तो वैल्यूएशन के बाद आप यू गॉट योर एंट्री. धीरे धीरे ऊपर जा रहा है, गॉट योर एंट्री. ठीक है. अभी यहाँ से आपको 9900 में मिल गया. नाउ 200 300 आप पहुंच गए. यहाँ पे आपका ब्रीच हो रहा है और मोमेंटम भी लूज हो रहा है. यू टेक योर एग्जिट. टेक योर एग्जिट. इसमें इधर से मैं फिर से चला गया. यू कैन ट्रेल बेस्ड ऑन योर एंट्री. यू मे हैव टेकन, ट्राई टू टेक योर एंट्री एज क्लोज एज द 10-month मूविंग एवरेज. ये जो मूविंग एवरेज का आसपास जितना आप लोगे उस उतना आपका बैंड से सेफ्टी होगा. जो ये बैंड जा रहा है इससे बहुत दूर चला गया है, मत लो. जब पास में आ जाए देन इफ यू टेक, योर स्टॉप लॉस वुड बी वेरी लेस. तो वो आपके लिए मार्जिन ऑफ सेफ्टी रहेगा. देन व्हाट वी हैव सीन,
stop loss, then again it is 2-3 महीने का a consolidation, then a strong up move. Then it took a support over here, continuously it is going up. Now we are seeing again it is slowly flat to down and price is also coming. Take your exit at a 918. Now point is whether it is giving a entry to you, JPM Auto, you may trade and exit. You may trade and exit on a different time frame. But on an investment time horizon, still it is not above this 10-month moving average. So it is a trader's thing. Maybe traders may trade in this particular point, but you should not take your mid to long term decision over here. Next, I'm coming in a different chart where people sometimes uh, take a wrong decision that what to do. They depend on others. Don't depend on others. So here also, if you look at this is a HPL electric chart where we have seen a um, first movement has started after a 10-month moving average is slowly moving up at 100 rupees. If you look, go on my Twitter page or my study, wherever I have posted study, exactly at a 100, not looking at technical, combining thing. First, something related to smart meter came on my radar, Janus and HPL Electric. Then it has, now I'm getting a right entry. One, good business, clarity, right? Now you trail, you get a straight uptrend. Done. Now slowly it's losing momentum. Whenever losing momentum, you can reduce your exposure, you can close. And now think about this particular situation. It is still, it is what has happened? It has given a bounce back. It may sustain, it may not sustain, that you need to evaluate. But from a technical point of view, if someone is unable to understand fundamental dot what to do, how much risk to take, this is not the time to take the risk unless this particular price and this moving average is showing little upward journey. What we have seen, again, we have seen a similar rejection. So we may see again a support over here, that is different, but you cannot take this entry. You can take your entry over here. That would be a best entry. Won't lose much. But if you think whether to hold, when not to enter, here not to enter, when to enter, that is a different topic. That one may think of, okay, fine, where some kind of a demand is coming, so where my stop loss is very low. So one may think of over here, supply zone, सप्लाई करके आ जाओ, जहाँ पे डिमांड है वहां पे आप एंट्री लो. यहाँ पे कुछ नहीं है, ना एंट्री है ना एग्जिट है, कुछ है. आप कुछ मत करो, नो एक्शन जोन. इफ यू हैव टेकन एंट्री, रॉन्ग एंट्री, रिड्यूस योर एक्सपोजर और क्लोज योर एक्सपोजर. नाउ कम ऑन अ जेनस पावर. Same thing, like same, almost same. The price was hovering. You will see from a 80 level. I spoke about this a way I was analyzing this particular business, and 80 onwards, slowly it's going upward, and we have seen a straight movement to 60. Then again a consolidation. The monthly closing is above 10-month moving average. There is no closing of any candle which is below 10-month moving average. Then it has gone. Whenever it is giving a closing, close your thing. If someone want to take an entry at a 240, 260, again it may come 240, 260, again it will go. But whether I should take entry here, no. Whether I should reduce exposure, yes, one can do that because it's breaching this line. Why to fight with market?
If market is saying something, just follow it. Wait for a month close. If monthly closing is below this line, monthly closing done, close it. Don't argue with market. Second, ISMO. See, in ISMO, what happened? ISMO, my post was around 131 crore market cap. So near about this particular zone. From there, it has gone up to 250, then it was hovering. Then again, we have seen a straight up move. Then it has given a clear exit to you at a that I'm losing momentum. It is not upward tilted. Slowly it is going down. जब भी 10 मंथ मूविंग एवरेज धीरे धीरे 2-3 महीना के बाद अपवर्ड मूव हो जाना स्टार्ट कर देगा, then you think of taking your entry as close as this 10 month moving average. अभी जाके आपका एग्जिट कहाँ पे मिल गया था, जहां से ये पर्टिकुलर कैंडल आपका धीरे धीरे ये मूविंग एवरेज भी ढीला पड़ गया, प्राइस भी दिख रहा है, टेक योर एग्जिट. If your entry will decide that how much you can absorb. जैसे ही आपका प्राइस एक्शन यहाँ से ही मोमेंटम को लूज हो गया है, सो इफ समवन टेक देयर एग्जिट के बार बार उसको रिजेक्शन आ रहा है, मोमेंटम अगर लूज हो गया ना, दैट मीन वैल्यूएशन जस्टिफाइड. Some other trigger will come that will drive, that is different. For the time being, some uncertainty is there. So if you are not a very long term कि मुझे 7 साल कुछ भी नहीं देखना है, बहुत अच्छा जगह पे किया है. बहुत सारे लोग यहाँ पे जाके बैठे हैं 600 में लेके, नहीं मैं स्टॉप लॉस नहीं लूंगा या कुछ. यू नेवर नो दैट दिस विल बिकम यूनिटेक और दिस विल गो अप. So this is a good business. I'm just giving an example. So what has happened? It has taken a support from a last swing. जहां से ये ऊपर गया था, उसी जगह पे एक रेजिस्टेंस लेके ऊपर गया था, उसी जगह पे आपका वापस आया, जहाँ पे लास्ट वॉल्यूम भी हुआ था, एक अच्छा मनी फ्लो था वहां पे. देन इट टुक सपोर्ट एंड इट हैज गॉन अप विद अ न्यूज. सो दिस इज द वे टू डिसाइड व्हेन टू एंटर. आप यहाँ पे भी आपको दिखेगा कि ये पर्टिकुलर स्टॉक 1 मंथ के बाद ही ऊपर चला गया है, और इसका जो भी मतलब दिस पर्टिकुलर पॉइंट्स है ना, ये स्टॉक का मूविंग एवरेज धीरे धीरे ऊपर ही जा रहा था, थोड़ा फ्लैट टू कर्व हो रहा था. नाउ इट इज योर पार्ट कि मुझे जाके इसको डेली एंड वीकली टाइम फ्रेम में, वेदर इट इज अ मेजर मूविंग एवरेज 20, 50, 200, 150 मूविंग एवरेज के ऊपर अगर है स्टॉक प्राइस, देन ओनली यू टेक. डोंट टेक एनीथिंग एनीवेयर इनिशियल फेज. डोंट ट्राई टू टेक एनी डाउन ट्रेंड स्टॉक कि नहीं मैं डाउन ट्रेंड स्टॉक को मैं ले लूंगा, वहां से मैं ये ऊपर हो जाएगा. कभी कभी नहीं होगा, वो फॉल्स ब्रेकआउट होगा, देन इट मे कम डाउन. सो ट्राई टू take your entry. Don't try to take your entry over here initially. Once you know business, fine. Otherwise, your entry will come around 415-20 level. Then you can take your entry. Now, say another company, Jamna Auto. आप देखोगे कि ये पर्टिकुलर बिजनेस में क्या हुआ था. जब भी आप देखो कि यू विल सी 10 month मूविंग एवरेज स्लोली स्लोली अपवर्ड डायरेक्शन में जा रहा है, एंड स्टॉक ऑल्सो हैज गॉन अप. अगर कभी भी आपको लगे कि यहाँ पे क्लोज होना है, क्लोज कर दो यार, जहां पे भी. बट योर फर्स्ट एंट्री विल ट्रिगर एज क्लोज एज दिस. डोंट आर्ग्यू विथ मार्केट. वेन एवर इट कम्स बिलो 10 month मूविंग एवरेज, एनी मंथली क्लोजिंग, छोटा स्टॉप लॉस लेके निकल जाओ. उसके बाद वो गिरे ऊपर जाए, अगेन टेक री एंट्री. इफ यू आर trading, if you are investing, then also you need to keep a different stop loss by looking at a fundamental, how big conviction you have. Even with a big conviction, a company may not deliver. That time you need to really think about that. Are you investing in an industry? आप अगर किसी इंडस्ट्री में इन्वेस्ट किया है कि जहाँ पे 10 साल अच्छा जा सकता है, तो वो 10 साल अच्छा जाने के बाद, जैसे सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री या किसी भी फील्ड में आप चले जाओ,
तो वो इंडस्ट्री आगे जाके कैसे करेगा? आपको लग रहा है कि अच्छा होगा कि मैं प्राइस नहीं देखूंगा, हर एक जगह पे मैं बाई करूंगा, आई विल बाई, आई हैव अ कॉन्विक्शन, दैट इज डिफरेंट थिंग। बट मेनी पीपल आर नॉट इन्वेस्टिंग, दे आर थिंकिंग कि नहीं, मुझे गलत जगह पे एंट्री ना मिल जाए और गलत जगह पे मैं घुस ना जाऊं। तो कहाँ पे नहीं लेना है? नहीं लेना है जब भी आपका 10 मंथ मूविंग एवरेज थोड़ा धीरे धीरे नीचे जाए, आप एग्जिट ले लो आराम से। उसके बाद जैसे वो 1-2 महीने से आपको दिखाए कि नहीं, ये तो आप, मैं अभी धीरे धीरे ट्रेंड ऊपर जा रहा है, टेक योर एंट्री समवेयर। देन आप जितना देर उसको ट्रेल कर सकते हो आप ट्रेल करो। सेम थिंग, इट हैज कम डाउन, टेक योर एग्जिट, multiple entry, multiple exit you will get when you are doing through a technical thing। बट आपको एक लंबा अच्छा सा ट्रेंड, आपको कब में कब एंट्री लेना है कब एग्जिट लेना है, इससे ज्यादा कब नहीं एंट्री लेना है बात कर रहा हूँ। यहाँ पे नहीं लेना है कि नीचे जा रहा था, कभी भी कुछ भी ग्रीन कैंडल देख के भी नहीं लेना है, बिकॉज मूविंग एवरेज इज गोइंग डाउन, सो इट केम डाउन, सो इट हैज गिवन अ सप्लाई ओवर ईयर। फाइन, ठीक है, चलो आपका स्टॉप लॉस लग गया यार। एवरी टाइम यू विल नॉट बी राइट, यू नीड टू टेक योर स्टॉप लॉस व्हेन थिंग्स आर नॉट गोइंग एज पर यू। इट देयर इज नथिंग कि मुझे ना, अभी देखो लास्ट 2-3 महीने से क्या हो रहा है, इट्स स्लोली मूविंग एवरेज के ऊपर है लास्ट 3 मंथ्स, so it's giving you a direction, so your stop loss is very small, you connect all other fundamental dot, take your entry. Now come to this index। बहुत लोगों का एक सिंपल इंटर्नशिप सेशन में तो मैंने बोल दिया है सबको, दे नो द थिंग दैट इवन आई ऑल्सो कन्वेड। 1 second। Not this one, sorry, moving। यस, सॉरी। वन सेकंड। आरएसआई को आप चेंज कर लो, ठीक है। नो, आरएसआई इज दिस मूविंग एवरेज येलो टू रेड। मैं सिंपल तरीके से आपको बोल देता हूँ। नाउ कम ऑन अ वीकली चार्ट, विल फाइंड अ पैटर्न कि कब हम लोगों को एंट्री अगेन अवॉइड करना है, रिड्यूस करना है एक्सपोजर। जब भी आरएसआई कहीं ना कहीं पे 60-67 में आपको दिख रहा है, आसपास में इतना सारा रेजिस्टेंस है, ठीक है, तो आपको धीरे धीरे मोमेंटम लूज होते हुए दिखेंगे। आप मेरे मैसेज भी अगर फॉलो करोगे, जून मंथ से मेरा मैसेज था कि मार्केट, आई एम रिड्यूसिंग माय एक्सपोजर, सो व्हाट विल हैपन नो, देन यू कैन टेक मल्टीपल गुड एंट्री एट नियर सपोर्ट। आप अगर सिर्फ बहुत लोगों का ओपिनियन नहीं लेके, क्या आपसे मिस हो जाएगा, यहाँ पे ले लिया था, यहाँ पे मैंने एग्जिट कर दिया, ठीक है मिस हो जाएगा, बट आप अगर सेव कर लेते हो सही जगह पे एग्जिट लेके, उसके बाद देखेंगे ना, बहुत तरीका है आपके पास, प्रोसेस है, फ्रेमवर्क है, तो आप अच्छे से एक अच्छा बिजनेस ढूंढ पाओगे। नहीं है वो आपको प्रॉब्लम है, तो आपको मार्केट में सबसे थोड़ा आगे रहना है कि वेन एवर स्टॉक प्राइस टचेस
like a bank index touch 70 72, it generally market gives a corrective action. 60 67 यहाँ पे इस फेज में बोल रहा है कि भाई मेरा तो ताकत 67 से ऊपर जाने का नहीं है, टेक दैट एक्शन। हिस्टोरिकल 70 72 है, वैसे ही जाता है। ठीक है, अगर अभी के टाइम पे इसका जो स्ट्रेंथ है दैट इज 60 67, रिड्यूस योर एक्सपोजर, नो कम ऑन अ निफ्टी। when to take exit? Whenever nifty comes near 60 70 75 प्लस जोन, आप रिड्यूस करो एक्सपोजर। आप देखोगे या तो एक इक्वल हाई या तो एक रेजिस्टेंस वाला फेज आपको दिखेगा हर एक आरएसआई में। मैं आरएसआई का बात कर रहा हूँ, उसके बाद आप चार्ट देखोगे वही चीज दिखेगा, करेक्टिव एक्शन। यहाँ पे स्ट्रेट नीचे गया, सबको डर लग रहा था कि भाई ये नीचे जा रहा है, कहाँ से सपोर्ट लिया? एग्जैक्टली सपोर्ट से सपोर्ट लेता है, आस पास में ले लेगा। बट दिस इज द टाइम टू ऐड, दिस इज द टाइम टू रिड्यूस। ये नहीं, यहाँ पे ना ये इतना ताकत नहीं है कि ये ब्रेकआउट यहाँ पे देके इधर चला है। ये वाला ब्रेकआउट हुआ था इस जगह से, इस बार क्या हुआ, ये ब्रेकआउट फेल हुआ, देन इट केम डाउन। नाउ इट मे टेक सपोर्ट वेयर, इट मे टेक सपोर्ट ओवर हियर, एंड यू नेवर नो, द मार्केट इज सुप्रीम। आप कभी भी प्रेडिक्ट नहीं करोगे, दिस इज नॉट द बेस्ट टाइम टू ऐड। यू मे एक्सपेक्ट दैट मार्केट may take a support and again may move up towards this. So in this way you can avoid a wrong exposure in market, कि मैं एक्सपोजर ले लिया गलत जगह पे, ऐसा अवॉइड कर सकते हो। जब भी चार्ट में दिखे, चार्ट में भी ऐसे बिजनेस को देखना है कि जो बिजनेस आपको, कोई भी बिजनेस हो जो मूविंग एवरेज के ऊपर हो। और ये वीकली टाइम फ्रेम में मैंने आरएसआई को दिखाया है इंडेक्स में। सिंपल, जब भी जाए आप एक्सपोजर रिड्यूस करो। आप ट्रील में बहुत लोग क्वेश्चन करते हैं कि ट्रील ट्रील ट्रील, ट्रील में क्या हुआ? अब देखो, ट्रील हैज गिवन एंट्री क्लियर कट at a very early 33, because I was reading ट्रांसफॉर्मर सेक्टर, जितना मुझसे हो पाया मैंने किया। उसके बाद 300 तक मैंने आई ट्रेल्ड, देन उसके बाद वो 1200 तक गया था। ये तो स्पीड होने के बाद वो पिक्चर है प्राइस का। यहाँ से आप पकड़ लो, मेरा 15 का एंट्री होगा। सो वहां से जितना मैं ले सकता हूँ मैंने लिया। देन इट हैज गिवन अ क्रेजी रन टुवर्ड्स 600, आप पकड़ लो वहां से। तो अभी क्या दिख रहा है? कभी कोई प्राइस में मूवमेंट है क्या? पूरा टिल्ट हो रहा है। स्टिल पीपल आर टॉकिंग अबाउट ट्रांसफार्मर ट्रांसफार्मर ट्रांसफार्मर। कुछ नहीं होगा। मैंने पहले भी ये सारी चीज में कुछ न्यूज आएगा, बहुत बड़ा डेवलपमेंट होगा, दैट इज डिफरेंट। बट एज एन इन्वेस्टर यू शुड नॉट कैरी अवे कि नहीं मुझे ना एक ट्रांसफार्मर का स्टॉक लेना है, इधर जाके फंस सकते हो। सो दिस इज टाइम टू अवॉइड, when not to enter. This is not to enter. This is time to reduce if you have even. Though I'm not a, I cannot give a recommendation. This is a learning video. What I follow, I'm suggesting you. It's not necessary you need to follow it. If it is at all helpful to all, okay, when not to enter, many businesses are there where 10th month moving average is tilting towards down. Don't take entry. Whenever price is staying left side of the moving average, if I say simple, जब भी प्राइस आपको बाएं तरफ दिखे मूविंग एवरेज के, और मूविंग एवरेज थोड़ा ऊपर जाते हुए दिखे, तभी आप लो। जब वो थोड़ा गिरे, कि धीरे धीरे नीचे गिर रहा है और प्राइस भी गिर रहा है, तब उसको मत लेना है, अवॉइड करना है। अगर ऐसा कोई स्टॉक दिख रहा है कि जहां पे, जो मैंने दिखा जेबीएम ऑटो, ये सपोर्ट ले सकता है, दैट इज डिफरेंट। अभी गिर रहा है, इट मे टेक सपोर्ट ओवर हियर, you can, so why you will enter over here? You can trade small spike and move out. That is a intraday thing I'm not talking about.
बट आप एक स्विंग नहीं खेलोगे, क्योंकि अभी स्ट्रेंथ लूज है। अब डेली में जाके देख लो, कहीं पे भी जाके देख लो, वो मूविंग एवरेज के नीचे ही होगा। तो आपको एक कहाँ पे लोगे, स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन पे। कभी भी प्राइस अगर मूविंग एवरेज से नीचे दिखे 10 मंथ में, आपको वहां पे एंट्री नहीं लेना है। और वो अगर नीचे जाते हुए देखे 10 मंथ मूविंग एवरेज धीरे धीरे नीचे जा रहा है इधर से ही, तो वहीं पे आपको निकल जाना चाहिए। कहाँ पे एंट्री लेना चाहिए, जब से वो ऊपर जाने की तरफ मूव ले रहा है, जितना नजदीक हो सके आपको वहां पे एंट्री लेना है। थैंक यू एवरीवन, होप दिस वीडियो विल हेल्प टू ऑल। एंड कभी कोई भी टॉपिक में या कुछ डाउट है, डेफिनेटली यू कैन आस्क।